Good morning, students. Today we are going to read chapter number 3 of English, that is the talkative turtle. As the talkative turtle, as the title suggests, the main character of this story is a turtle named Tullu and his two friends, swans. The word talkative means someone who talks a lot. So, let's get started. Once upon a time, there lived in a lake a turtle called Tullu. He had two swans as his friends. All of them were best of friends and used to meet on the bank of the lake daily. So, once upon a time, there lived a turtle whose name was Tullu. He lived in a lake and he had two friends, swans. They used to meet daily on the river bank, on the bank of a lake. Bank of a lake means the land that is alongside a lake. These they all were best friends. They were good friends of each other. Okay? And they used to meet daily on the river bank. Before returning to their homes at sunset, they used to gossip for a long time. They enjoyed one another's company. So, while coming back to their home at sunset, sunset means evening time. Sunset का मतलब होता है सूर्यास्त. सूर्यास्त होता कब है? इवनिंग में. So, while coming back to their home, they used to meet at the river bank and used to gossip for a long time, and they liked each other's company. They liked to spend time with each other and they liked to talk with each other. It is just like you must have friends in your neighbors. So when you come back from school, you also talk to your friends about what happened in school, how was your day, etc., etc. So in this, and you also like talking to your friends. So in the same way, these two swans, while coming back to their home, they used to meet Tullu on this river bank and they used to gossip. Gossip means they used to talk about the whole day and they used to like each other's company. Okay? One year, the monsoon failed and there was no rain. As a result, the lake began to dry and the swans got worried about the low water level. So one year what happened? There was no rain. So there was no rain. As a result, what happened? The lakes, the water bodies, other water bodies began to dry and the lake in which Tullu used to live also began to dry. So, and because of that, these two friends, swans, they got worried about the low water level. So when there is enough rainfall, what happen? Lakes, ponds and other water bodies have plenty of water. They get filled with water. But when there is no rain, then water level start decreasing and it began to dry. Same happened with this, in this case, when there was no rain, the lake in which Tullu lived began to dry. Okay? And because of this, swans got worried about the low water level. तो यहाँ पे अभी तक हमने ये पढ़ा है कि एक बार जो है एक वक्त की बात है जब एक टर्टल जिसका नाम टुल्लू था वो एक नदी में जो है रहता था. उसके दो फ्रेंड्स थे स्वैन्स. ये तीनों आपस में बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स थे. ये डेली नदी के किनारे जो है मिलते थे एक दूसरे से. बैंक ऑफ द लेक का मतलब नदी का किनारा, तालाब का किनारा. लेक का मतलब तालाब, उसके किनारे पे मिलते थे. और इन तीनों को आपस में बहुत ज़्यादा देर तक वो बात करते थे, गॉसिप करते थे. और जब भी शाम को ये दोनों स्वैन्स घर की तरफ आते थे, वो टुल्लू से मिलते थे नदी के किनारे और बहुत देर तक बातें करते थे. एक साल ऐसा हुआ कि जो है
बारिश हुई नहीं। जब बारिश नहीं हुई तो जिसकी वजह से क्या हुआ, जिस तालाब में जो है टुल्लू रहता था उसका पानी कम होने लग गया, जिसकी वजह से ये दोनों स्वैन्स बहुत ज़्यादा वरीड हो गए, क्योंकि जब बारिश नहीं हुई तो वाटर लेवल धीरे धीरे कम होने लग गया और सूखा पड़ने लग गया, इसलिए। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या हुआ। So you can see from their faces that they were very worried about the low water level of the lake. Okay, so let's see what happened next. The Tullu requested the swans to find some other lake which was full of water. Then he told them to find a strong stick also. He told them that once they find another lake, they can carry him to the lake with the help of the stick. So their faces you can see that swans are very worried. So this turtle Tullu suggested these swans, his friend, that requested them to find a lake which is full of water. Okay, so and if they were able to find such a lake which is full of water, then he also suggested to bring one strong stick along with them while coming back. Okay, so now let's see why he asked his friends swan to bring a strong stick. So he suggested them that he would hold the stick tightly in his mouth while both of them can hold the stick at either ends and fly. So why did this turtle Tullu ask the swans to bring a strong stick? Because he told them that he can hold this stick from the middle and both the swans can hold the stick from either ends. Either end means both end, and in this way he can take this turtle to that lake which is full of water. Okay, तो क्या हुआ, जब आप देख ही सकते हो कि स्वैन्स बहुत ज़्यादा वरीड है लो वाटर लेवल की वजह से तालाब की, तो अब टुल्लू टर्टल ने अपने फ्रेंड स्वैन्स को बोला कि आप दोनों उड़ के जाओ और एक ऐसा तालाब ढूंढो जहाँ पे बहुत सारा क्या हो, पानी हो, और आते टाइम जब आपको वो मिल जाए कोई ऐसा तालाब तो आते टाइम एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टिक भी लेके आना। तो उसने क्यों कहा कि आप स्टिक लेके आना अपने फ्रेंड स्वैन से? उसने इसलिए कहा क्योंकि वो स्टिक को जो है सेंटर से होल्ड कर सकता है, होल्ड का मतलब पकड़ना, और जो उसके फ्रेंड स्वैन्स है उसको वो दोनों एंड से पकड़ सकते हैं। इस वे में ये टर्टल जो है स्वैन्स की हेल्प से और स्टिक की हेल्प से दूसरी नदी जिसमें बहुत सारा, दूसरा तालाब जिसमें बहुत सारा पानी है वहाँ तक उड़ के जा सकता है। ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंड नेक्स्ट। The swans flew far and wide in search of a lake. After some time, they found a lake which had plenty of water in it. They returned to carry the turtle. So, after this, what happened? The swans flew far. They started searching for a lake and they flew far and far and far. And after some time, they found a lake which had plenty of water. Plenty of water means enough water. Enough water and full of water. They were able to find a lake which had plenty of water means which had enough water in it. So they returned to the turtle after finding they returned to carry the turtle. Okay, तो अब क्या हुआ, इस टर्टल ने इनको रिक्वेस्ट की कि आप जाओ एक तालाब ढूंढो जिसमें बहुत सारा पानी हो और आते टाइम एक लकड़ी भी लेके आना जो बहुत मजबूत हो, जिसकी हेल्प से मैं आप दोनों मुझे कैरी करके उस तालाब तक लेके जा सकते हो। अब जो टुल्लू टर्टल की बात सुन के स्वैन्स जो है वो दूर दूर उड़ते हैं और सर्च करते हैं, सर्च का मतलब ढूंढते हैं एक ऐसा तालाब जहाँ पे बहुत सारा पानी हो, प्लेंटी ऑफ वाटर, बहुत सारा पानी हो।
और कुछ टाइम के बाद वो सक्सेसफुल हो जाते हैं एक ऐसा तालाब ढूंढने में, और उसके बाद वो टुल्लू टर्टल को लेने के लिए वापस आते हैं. ओके, सो आई एम टुडे वी आर ओनली गोइंग टू डू टिल दिस. So you have to read this chapter up to this at least 2 times. For your reference, I have written few words which will be helpful for you while reading the chapter. So the first word is bank of the lake. Bank of the lake, land alongside the lake. नदी का जो तालाब है, लेक का मतलब तालाब, उसके किनारे में जो ज़मीन होती है उसको हम बैंक ऑफ द लेक कहते हैं. बैंक ऑफ द लेक का मतलब किनारा. तो नदी के किनारे मिलते थे टुल्लू टर्टल और अपने फ्रेंड्स के साथ. सजेस्टेड, टू मेंशन एन आइडिया यू हैव फॉर समबडी. आप किसी को कोई राय दे रहे हो, सजेशन दे रहे हो, उसका मतलब होता है सजेस्टेड. जैसे यहाँ पे टुल्लू टर्टल सजेस्टेड हिज फ्रेंड स्वैन्स टू ब्रिंग अ स्ट्रॉन्ग स्टिक विद दैम वाइल कमिंग बैक. जैसे यहाँ पे टुल्लू टर्टल ने सजेस्ट किया कि आते टाइम एक स्ट्रॉन्ग लकड़ी लेके आना. ओके, होल्ड. होल्ड का मतलब टू टेक समथिंग एंड टू कीप इट इन योर माउथ हैंड. होल्ड का मतलब होता है पकड़ना. जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो टुल्लू टर्टल इज होल्डिंग द स्टिक फ्रॉम मिडल एंड हिज 2 फ्रेंड्स आर होल्डिंग द स्टिक फ्रॉम ईदर एंड. So our next word is either end. Either ends means at both ends. Both ends, as you can see in the picture, these 2 swans are holding this stick from either end. That means both end. Both end का मतलब दोनों किनारा, दोनों किनारों से उन्होंने पकड़ा है. दोनों किनारों को कहते हैं either end. Next comes flew. टू मूव थ्रू एयर. फ्लू का मतलब उड़ना. सर्च, टू लुक फॉर समथिंग दैट इज मिसिंग. सर्च का मतलब होता है ढूंढना. लाइक दीज फ्लू. हेयर यू कैन सी द स्वैन्स फ्लू फार. दैट मीन्स दे इन सर्च ऑफ अ लेक दे वर फ्लाइंग वेरी फार एंड फार. सो दे फ्लू फार. बहुत दूर तक वो उड़ के गए. वाइड इन सर्च ऑफ लेक. सर्च का मतलब किसकी तलाश में, लेक की तलाश में. ओके, सो दीज आर फ्यू वर्ड्स विच आई हैव रिटन फॉर योर रेफरेंस. दीज वर्ड्स विल बी हेल्पफुल फॉर यू while reading the chapter. I hope you understand today's class. Please read this chapter at least 2 times and we will continue with our chapter in the next class. Okay? Thank you so much. Have a nice day. Bye.